Good afternoon, students, and welcome you all to the chapter number 9, that is force and laws of motion. In our previous videos, we have talked about the two laws of motion, Newton's two laws of motion, that is the first law of motion and the second law of motion. And both these laws of motion, they help us to understand that it is the external force which is applied on any object to set up it into motion. Clear? Now, both these laws also explains us or also provide us with certain of facilities to determine how the external force is being applied and what is the magnitude of the force to set up any object into motion. Now today we are just going to learn about the third law of motion, that is Newton's third law of motion. According to the Newton's third law of motion, when we are just going to talk about the Newton's third law of motion, then according to this law states that whenever any object exerts some amount of force on other object, then that second object also exerts the same amount of force on the first object. Clear? So here we can say that the magnitude of both the forces are same. The magnitude of the forces that is applied by both the objects on one another are same. Getting my words? And the direction of the forces which are being applied by both the objects on one another, it is different. So we can recollect this with the help of varied examples. In your NCERT book, varied examples have been given. So the very first example comes that whenever football match is going on, and while kicking up the football, one of the player unknowingly hits up with another player, then both of them gets hurt, because one of the player, while colliding up with the other player, it is exerting certain amount of the force on the next player, and that next player, it is again in reaction to the force applied by the first player, is again applying certain amount of the force which is equal in magnitude to the first player. Hence both of them get hurt. Getting my words? And the force exerted by both the players, though it is equal in magnitude, but it is opposite in direction. Clear? And here both the forces that is applied by both the players, it is acting on two different objects. Getting my words? So from this we deduce the third law of motion, according to which it states that this law states that for every action there is an equal and opposite reaction. Clear? So this law states that for every action there is an equal and opposite reaction. You can recollect this from various examples that are seen around you all. Accordingly, like the pool table, while you are playing that game, so you just strike up the ball with the help of the the striker that you are having in your hand, and while you are hitting up the ball, that ball again tries to exert some amount of the force on the first object. Or in another word, we can take an example of the carom. So while hitting up the carom with the help of your fingers, so while you are doing this with the help of your fingers, you are applying certain amount of the force on the the striker of the carom board. Clear? So what happens over here? While doing this, you are exerting some certain amount of the force, and in return the carom seeds, they are also not the seeds, the carom striker, it is also exerting the same amount of the force back to the fingers. Clear? Another example which we can take roundabout from our day-to-day life is while exerting the spring, you are applying certain amount of force. While suppressing the spring, you are applying certain amount of the force. Clear? And you may notice that as soon as you remove your hand, the spring, it jumps back again to regain its original position. Means while you were applying
a certain amount of the force on the spring, it was also exerting some certain amount of the force on your hand. Getting my words? But since the mass of your hand was much and more in comparison to the spring, therefore the magnitude of what to say momentum was different, or you can say the magnitude of acceleration produced was different, and hence you couldn't see any change in the position of the hand. Clear? So these are what to say varied examples by which we can easily explain the third law of motion, that is for every action there is an equal and opposite reaction. Excuse me. Clear? We can say explain this by a couple of examples. A couple of examples are given in your books. What to say? As I have told you about the spring. Clear? You have to take two spring balances. You might have seen two spring balances which are used to measure or weigh varied things. Clear? And you can very easily see in your school in the chemistry lab, where it is used to measure varied salts. Clear? So you have to take two spring balances and you have to tie one of the spring balance, that is B spring balance, to the wall, and again you have to tie, this is the B spring balance, and again you have to tie this B spring balance, you have to attach this B spring balance to A spring balance. Clear? Now you are just trying to pull this A spring balance towards yourself, and while doing so, what are you doing? You are exerting certain amount of the force on spring balance A, and this A spring balance is exerting certain amount of the force on the B spring balance. Clear? So what is happening over here? A is exerting certain amount of the force on B, and B is also exerting certain amount of the force on A, since it is also pulling A spring balance towards itself. Clear? So here both from this example we can see that both the spring balances, that is A and B, they are exerting certain amount of force on one another, which is equal in magnitude but it is opposite in direction. Clear? Now as I have told you all that though both of these what to say objects, they are applying the force which is equal in magnitude and opposite in direction, but still both the forces, they are acting on different objects. Clear? And we can again illustrate that how it happens, that how we can say that the forces, they are acting on different objects. Supposedly again it has been explained with the help of an example over here, that while you are standing on the floor or on the road or wherever you are standing. Clear? And आप मूव करना चाह रहे हैं, in that very particular condition आप जब मूव करना चाह रहे हैं तो there should be some force. हम फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, तो हमें जब कभी भी मोशन में जाना है, ठीक है, हम पहले वाले लॉज जो पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग कि अगर हमारी बॉडी रेस्ट पोजीशन में है देन इट टेंड्स टू बी एट द रेस्ट पोजीशन, एंड इफ वी आर इन द स्टेट ऑफ मोशन देन इट टेंड्स टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन अनटिल एंड अनलेस सर्टेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. ये हम पहले दो लॉज में पढ़ चुके हैं. ठीक है, सो अगेन कमिंग बैक टू दिस, सो व्हेन आई एम स्टैंडिंग ऑन द रोड इन द रेस्ट पोजीशन, और रेस्ट पोजीशन से अब मैं मोशन की कंडीशन में आना चाह रही हूँ, यानी मैं अपनी उस रेस्ट पोजीशन से आगे की ओर मूव करना चाह रही हूँ, लोकोमोट करना चाह रही हूँ. इन दैट वेरी पर्टिकुलर कंडीशन क्या होगा कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. क्लियर? और उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा कि मैं मेरी जो बॉडी है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरनल फोर्स जो है अप्लाई करेगी. इंटरनल फोर्स मतलब द फोर्स कमिंग फ्रॉम विद इन द बॉडी, और वो जो फोर्स होगा इट इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ मस्क्यूलर एनर्जी. गेटिंग माई वर्ड्स? ये जो मेरे मसल्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द लिम्ब एरियाज, ठीक है, दे आर गोइंग टू मेक माई लिम्स इन टू बी सेट अप इन द पोजिशन ऑफ मोशन. गेटिंग माई वर्ड्स? सो while doing this my body is going to move ahead. लेकिन जब मेरी बॉडी अहेड मूव कर रही है, मेरी बॉडी जब अहेड मूव कर रही है उस पर्टिकुलर कंडीशन में मेरे जो फीट हैं दे आर मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. गेटिंग माई वर्ड्स? लेकिन वो जो फीट जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, एट द सेम टाइम द फीट इट इज व्हाट टू से पुशिंग अप द रोड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. गेटिंग माई वर्ड्स? यानी यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लग रहा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है. यानी मेरे फीट तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन
रोड को या फ्लोर को पीछे की ओर पुशअप करते जा रहे हैं. Getting my words? So with this we can illustrate that different forces, they act on different objects. Again stating this, that according to this law, two different forces, they act on different objects having same magnitude but they are opposite in direction. Clear? So यहाँ से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि opposite in direction है, सेम इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन सेम इन मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी दे डू नॉट प्रोड्यूस इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. मतलब एक्सेलरेशन जो यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट्स पे प्रोड्यूस होगा वो इक्वल नहीं होगा. इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स. गेटिंग माई वर्ड्स? इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अगेन अ वेरी गुड एग्जाम्पल इज गिवन इन योर बुक कि जब आप किसी भी गन से बुलेट को फायर अप करते हो, ठीक है, तो जब बुलेट गन को फायर अप कर रही है तो इट इज अप्लाइंग सर्टन अमाउंट ऑफ द फोर्स ऑन द बुलेट. क्लियर? जिसकी वजह से बुलेट जो है इट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. उसी टाइम बुलेट भी जो है सम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करती है बैक ऑन द गन, जिसकी वजह से गन जो है पीछे की ओर जो है पुशअप की जाती है. लेकिन यहाँ पर क्या है कि बुलेट जो है इट इज स्मॉलर इन साइज, यानी उसका जो मास है इट इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ द गन. इसलिए उसका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो है इट इज मोर एंड हेंस इट मूव्स मच इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. वो काफ़ी दूरी तक जाती है, ठीक है, और हमें उसका मोशन नज़र आता है. लेकिन जो मास ऑफ द गन है इट इज़ मच ग्रेटर इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ द बुलेट. एंड हियर व्हाट हैपन्स कि जब बुलेट गन के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाती है, ठीक है, तो क्या होता है, चूंकि मास गन का ज़्यादा है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस है वो इट विल नॉट बी इक्वल टू दैट अप्लाइड ऑन द गन टू दैट अप्लाइड ऑन द बुलेट. एंड हेंस हमें बुलेट गन के अंदर कोई ज़्यादा मोशन नज़र नहीं आता है. ओनली अ वेरी स्लाइट डिस्टर्बेंस फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन हमें महसूस होता है. गेटिंग माई वर्ड्स? सो दिस अगेन explains that the force which is acting on both the objects, though they are equal in magnitude, opposite in direction, but still they are related to the mass of the both the objects on which the forces are being applied. Clear? Therefore mass plays a very great role or significant role in third law of motion. Getting my words? क्लियर? सो इस चीज़ को हम फर्दर ऑन एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक और एग्जांपल इसमें आपकी ही एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि जैसे कोई रोइंग बोट है. क्लियर? रोइंग बोट से जब कभी कोई भी पर्सन है जब वो जंप ऑफ करता है ऑन टू द शोर. क्लियर? सो वाइल डूइंग दिस ही इज जंपिंग ऑफ फ्रॉम, जब वो जंप ऑफ कर रहा है सो द पर्सन इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. लेकिन वाइल डूइंग दिस व्हाट ही इज डूइंग, ही इज पुशिंग बैक द the boat in other direction, that is in the backward direction. Clear? So again all and all these are the examples of the third law of motion, which states that this law that for every action there is an equal and opposite reaction. Clear? Now we are just going to come to the topic that is conservation of momentum. Clear? So there is a derivation for conservation of momentum, and it is it holds true universally. Clear? So when we are talking about the conservation of momentum, clear? So these are the two balls. This is the ball A and this is the ball B. Clear? The mass of the ball A is ma and the mass of the ball B is mb, and the velocity with which they are traveling is ua and ub, and after collision, that is A and B, so B is exerting a force of F BA and A is exerting a force of F A B. Clear? This is
the condition before collision. Clear? And after collision, the condition is this, that MA, it is moving with the final velocity of VA and it is exerting VB. Clear? This is the C condition. Clear? So here we have taken two balls. हम यहाँ पर दो balls ले रहे हैं, A and B. A ball का जो mass है it is MA, B ball का जो mass है it is MB. Getting my words? A ball जो है move करना start करती है और इसकी जो velocity है with which it is moving in a particular direction towards the B ball वो कहलाती है UA. Getting my words? अब जब ये आएगी और इसकी तरफ मूव करेगी तो ये इसको स्ट्राइक अप करेगी और ये स्ट्राइक अप होने के बाद ये भी मूव करेगी यूबी. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों बॉल्स जो हैं एक दूसरे के साथ में कोलाइड अप करेंगी. गेटिंग माई वर्ड्स? जब ये कोलाइड अप कर रही हैं तो इनके मासेस जो हैं दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, दे आर गेटिंग समड अप टू गिव एन एग्रीगेट मास. ठीक है, एंड इन दैट वेरी पर्टिकुलर कंडीशन व्हाट इज हैपनिंग, दैट this what to say, ball A, it is exerting certain amount of the force on ball B which is said to be FAB. Clear? इसी तरह से जो बॉल B है अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी जो है पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करेगा विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड. ठीक है, सो अगेन B बॉल जो है जब A बॉल के द्वारा उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है तो B भी इन रिटर्न वापस फोर्स एक्सर्ट करेगी एंड दैट वेरी फोर्स विल बी FBA. दिस इज ऑल द कंडीशन बिफोर कोलिजन. ठीक है, इसी तरह से आफ्टर कोलिजन MA जो है इट इज मूविंग विद द फाइनल वेलोसिटी ऑफ VA एंड इट इज एक्सर्टिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ द फोर्स ऑन MB, दैट इज B बॉल. ठीक है, एंड आफ्टर कोलिजन दे आर जस्ट गोइंग टू गेट समड अप. ठीक है, इस चीज को हम इस तरह से दिखा सकते हैं for derivation. That from equation 9.1 momenta का मतलब होता है it is plural of momentum. ठीक है, of ball A before and after the collision are momenta of ball A before and after collision. Clear? So the momentas are MA, it will, sorry, I can write it over here as MA UA and MA VA. ठीक है, this is initially before collision and this is initially after collision. Clear? And the force which is acting on it is FAB. Clear? During the collision, the rate of change of momentum during the collision will be what? M A VA minus UA upon T. Getting my words? इसी तरह से similarly the rate of change of momentum of ball B, rate of change of momentum of ball B वो हो जाएगा FBA is equals to MB VB minus UA sorry VB UB upon T. Clear? So according to the third law of motion, since FAB is exerting certain amount of the force on ball B, therefore ball B is also exerting certain amount of the force which is equivalent to FBA. Clear? So accordingly दोनों ही जो conditions है उसके according हम लिख सकते हैं that FAB is equals to minus FBA, since both the magnitude of both the forces it is equal, but since it is opposite in direction तो यहाँ पर हम इसको negative sign के साथ में show up करेंगे. Getting my words? So I can put the values
of FAB and FBA over here, that is FAB की वैल्यू यहाँ दी हुई है, that is MA is equals to VA minus UA upon T, clear, minus FBA की वैल्यू ये रही, that is MB is equals to VB minus UB upon T, clear. So यहाँ से हमें मिलता है that is MA UA plus MB UB is equals to MA VA plus MB UB, clear. ये जो है it is the total momentum of ball A, total momentum of ball A and B before collision, ball A and B before collision, और ये वाला जो है इट इज टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल ए एंड बी आफ्टर कोलिजन, यानी यहाँ पर जो टोटल मोमेंटम था इट रिमेन कंजर्व्ड बिफोर कोलिजन एज वेल एज आफ्टर कोलिजन. सो from this we can say that the total momentum of both the balls remains conserved, clear. So from this we can very easily state that we can easily say that the momentum of both the balls before and after the collision remains conserved, clear. So with this we are just going to end up the topic over here, and in my next video I am just going to discuss some of the numericals with you people. Till then, thank you.